अस्सलाम वालेकुम। और टुडेज़ प्रैक्टिकल इज़ डीएनए एक्सट्रैक्शन। ब्लॉक 5 का फर्स्ट प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल में हमने एक सैंपल लेना है, उसमें से हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो सारा आज हम इस प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली एक सैंपल से डीएनए को निकालने के 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डीएनए आइसोलेशन, डीएनए प्योरीफिकेशन एंड देन डीएनए को हम एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम दैट सैंपल। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द डीएनए आइसोलेशन, यानी डीएनए को उसके सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट से आइसोलेट करना। ठीक है। अब वो हम कैसे करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं डीएनए आइसोलेशन की, जिसमें ग्राइंडिंग है, होमोजेनाइजेशन है, एंजाइमेटिक मेथड्स हैं, जिसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम आइसोलेट करते हैं। आज हम उनमें से एक मेथड होमोजेनाइजेशन डिस्कस करेंगे। हम अपने डीएनए को इस मेथड से आइसोलेट करेंगे, और जो होमोजेनाइज करने वाली मशीन होती है उसको हम कहते हैं वोर्टेक्स मशीन। इसमें जो है ना, वो जो होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या है, होमोजेनाइज करने का मतलब ये है कि हम उसको इतना इस तरह से हिलाएंगे कि सारा कुछ यकजान हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, यानी कंपोजिशन आपको एक जैसी मिलेगी हर चीज़ की। ठीक है। और इसमें हम प्रोटीन्स को, मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करते हैं, सेलुलर लाइसिस करते हैं, और डिफरेंट केमिकल्स भी यूज़ करते हैं जो कि ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें डिटर्जेंट्स हैं और केयोट्रोपिक सॉल्ट्स हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ द डीएनए प्योरीफिकेशन। डीएनए प्योरीफिकेशन, हम डीएनए को आइसोलेट कर लिया, अब हमने उस डीएनए को प्योरीफाई करना है। प्योरीफाई करने का मतलब है कि उसके साथ जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, लाइक जो टूटी हुई प्रोटीन्स हैं, टूटी हुई सेलुलर अदर कंपोनेंट्स हैं, आरएनए हैं, हमने उससे डीएनए को अलहदा करना है, यानी ऐसा सैंपल हो जिसमें सिर्फ डीएनए हो। दिस कैन इन्वॉल्व टेक्निक्स लाइक फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन विच सेपरेट्स डीएनए बेस्ड ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ये जो हमारे पास जो हम टेक्निक का यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन। ठीक है। इसमें हम ये वाली टेक्निक यूज़ करेंगे, और ये टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है कि ये डीएनए सॉल्युबिलिटी पर बेस करती है, जो कि डीएनए को उसकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हम बार बार, जो सैंपल है ना, अभी हम प्रोसीजर आपको वीडियो में दिखाऊंगी, बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। तो हम बार बार उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, डीएनए बार बार प्रेसिपिटेट होता जाता है, जो लेस सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं वो ऊपर सुपरनेटेड बनते जाते हैं और वो जमा होते जाते हैं, और हम उसको सेपरेट करते जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मेथड्स क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, जहाँ पर डीएनए स्पेसिफिक मैट्रिक्स के साथ बाइंड करता है, जबकि कॉन्टेमिनेंट्स जो हैं वो पास आउट हो जाते हैं। ये इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, वेरिफिकेशन का मकसद क्या है वो मैंने आपको बता दिया। डीएनए एक्सट्रैक्शन, अब जो हम करने लगे हैं मेथड, दैट इज़ द डीएनए एक्सट्रैक्शन। दिस टर्म जनरली इनकम्पसेस बोथ आइसोलेशन एंड प्योरीफिकेशन। ठीक है। इट रेफर्स टू द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डीएनए फ्रॉम अ बायोलॉजिकल सैंपल इन द यूजेबल फॉर्म। हम डीएनए को क्यों एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, टू यूज़ इट फॉर अदर पर्पसेस। हमने डीएनए टेस्ट करवाना है, हमने डीएनए से डीएनए की क्लोनिंग करवानी है, पीसीआर करवाना है, हमें डीएनए सैंपल चाहिए, तो वो डीएनए सैंपल हम अलहदा करेंगे। सैंपल से तो हमें डीएनए मिलेगा, पूरे सेल को तो नहीं हम डाल सकते किसी भी प्रोसीजर में डायरेक्टली, तो हमें उसमें से सिर्फ डीएनए चाहिए। तो वो डीएनए जिस प्रोसेस के जरिए से हमें मिल रहा है, दैट इज़ द डीएनए एक्सट्रैक्शन। उसके बाद अब इसके डिफरेंट मैथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं, फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड है, सिलिका बेस स्पिन कॉलम प्योरीफिकेशन है, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड सी टैब मेथड है, चिलिक फ्रीजर मेथड है, फिनोल फ्री मेथड्स भी हैं, ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन सिस्टम। इसमें से आप कोई से दो याद रख लें, लेकिन हम जो करने लगे दैट इज़ द फिनोल क्लोरोफॉर्म प्रोटीनेज के एक्सट्रैक्शन मेथड। इसमें हम फिनोल क्लोरोफॉर्म एक रिएजेंट है वो यूज़ करते हैं, प्रोटीनेज के सोल्यूशन यूज़ करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज फिनोल क्लोरोफॉर्म प्रोटीनेज के एक्सट्रैक्शन मेथड। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड। इट इज़ यूज फॉर द सैंपल्स विच डू नॉट हैव सेल वॉल्स एंड हैव सॉफ्टवेयर सेल मेम्ब्रेन्स, लाइक ह्यूमंस पर, एनिमल्स पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। द यूजुअल डीएनए obtained by this method is 50 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर। कैसे obtain किया वो भी हम बताते हैं। मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए, हमें सेल या टिश्यू सैंपल चाहिए, जो ब्लड भी हो सकता है, जो किसी टिश्यू का सैंपल भी हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा हमें बफर चाहिए, बफर में हमारे पास ट्रिस बफर हो सकता है, ईडीटीए बफर है। ठीक है। ये हमारे पास 2-3 लाइसिस बफर हैं। अभी हम इनके बारी बारी इन सारे कंपोनेंट्स के फंक्शन भी पढ़ेंगे वाइल डूइंग प्रोसीजर। एसडीएस बफर चाहिए, फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल जो हमारा मेथड है, हमें ये वाला रिएजेंट चाहिए, हमें प्रोटीनेज के सोल्यूशन चाहिए, 2 प्रोपेनॉल चाहिए, एब्सोल्यूट इथेनॉल चाहिए, और आरएनएज ए सोल्यूशन चाहिए विच इज़ ऑप्शनल। ठीक है। ये 3-4 चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे, तो जब आप प्रोसीजर्स देखेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगी। पूरी मैंने वीडियो ऐड की है, एग्जैक्टली इन्हीं रीडिंग्स के अकॉर्डिंग वो वीडियो है, उसमें यही रीडिंग जो अभी हम प्रोसीजर में यहाँ पर लिखी हुई हैं, बिल्कुल वही रीडिंग्स यूज़ हुई हैं। तो आप जस्ट वीडियो देखकर उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको हो जाएगा, बिल्कुल बहुत प्रिसाइज़ है। इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए, हमें माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स चाहिए, जिन्हें अपेंड ऑफ ट्यूब्स भी कहते हैं। अपेंड ऑफ ट्यूब्स कैसी दिखती हैं, जैसे यहाँ पर ये अपेंड ऑफ ट्यूब है, इसका एक लिड भी होता है, ये देखें इधर आपको लिड भी नज़र आ रहा है इस केस में। ठीक है। ये इसका लिड होता है, छोटी सी ट्यूब होती है, हमें ये चाहिए। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज चाहिए, सेंट्रीफ्यूग मशीन चाहिए। वोर्टेक्स मिक्सर एक छोटी सी मशीन होती है, अभी वीडियो में भी नज़र आ जाएगा इस तरह की, और इसके इधर इधर हम ना सैंपल अपना इसके अंदर नहीं डालते, इसके ऊपर ही रख देते हैं, और वो सैंपल को होमोजेनाइज करता है। अभी ये भी आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा। ठीक है। वाटर बाथ चाहिए, वाटर बाथ मतलब इंक्यूबेटर या हीट ब्लॉक, जिसमें हम इंक्यूबेट करेंगे, क्योंकि इस सैंपल में हमने ओवरनाइट इंक्यूबेशन भी करनी है। ठीक है। सो दैट वाज द इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स।
अब हम आ जाते हैं प्रोसीजर पर। यहाँ पर जिसका प्रोसीजर लिखा है इट इज़ वेरी लॉन्ग और इसको याद रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब अगर आप वीडियो देख लेंगे तो उसमें अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर वो वीडियो है, ठीक है, वो मैंने ऐड कर दिया। यू कैन सी एंड पर लिखे हुए हैं हमारे पास ये फंक्शंस के जो हमने केमिकल्स यूज़ किए हैं इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, तो ये वीडियो में भी साथ साथ आपको बता दिया जाएगा जो उसमें यूज़ किए गए हैं, ठीक है। अब वहाँ से देख सकते हैं या यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जैसे जो बफर्स हैं, HCl बफर है, उसका फंक्शन है वो pH को मेंटेन कर रहा है ताकि एंजाइम्स वर्क कर सकें। EDTA है वो डीएनए एंजाइम को इनहिबिट करता है ताकि डीएनए ना टूटे। NaCl क्या कर रहा है, डीएनए की डीनेचरेशन को प्रिवेंट कर रहा है। मैग्नीशियम क्लोराइड मिक्सिंग ऑफ डीएनए को प्रिवेंट कर रहा है फॉर विद अदर ऑर्गेनेलिस। उसके बाद SDS बफर है वो प्रोटीन डीनेचरिंग कर रहा है। सैचुरेटेड फिनोल है, ये डीएनए और डीनेचर्ड प्रोटीन्स को रिपेल कर रहा है, यानी वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। क्लोरोफॉर्म हमारे पास ऑर्गेनिक और एक्वस लेयर में फजीनेस को शार्प कर रहा है ताकि अभी प्रोसीजर में भी आप देखेंगे कि हम डीएनए को जब फेज आइसोलेशन होती है ना, जिसमें एक दो लिक्विड फेजेस बनती हैं, ऊपर वाली फेज में डीएनए होता है तो वो मिक्स ना हो जाए नीचे वाले के साथ, एक शार्प बाउंड्री रहे दोनों के दरमियान में, तो उसको क्लोरोफॉर्म मेंटेन कर रहा है। आइसोमाइल अल्कोहल फॉर्मिंग प्रिवेंट कर रहा है फिनोल की। सोडियम एसीटेट आपके डीएनए को प्रेसिपिटेट होने से बचा रहा है इफ़ यूज्ड, अगर हम ये यूज़ करें। वैसे हमारे प्रोसीजर में हम ये यूज़ नहीं करें, हम फिनोल क्लोरोफॉर्म यूज़ करें। उसके बाद इथेनॉल हमारे पास डीएनए को एंड पे डीएनए को प्रेसिपिटेट करता है, क्योंकि एंड पर हमें जब डीएनए पूरा अलहदा हो गया तो हमें वो लिक्विड फॉर्म में नहीं चाहिए, हम उसको प्रेसिपिटेट करते हैं। और TE बफर डीएनए को डिजॉल्व करता है, ठीक है। सो ये इन केमिकल्स के नेम थे। लेट्स गो टू द प्रोसीजर। Now, in the basic steps of DNA extraction, there are 6 core steps involved. The first step is the cell lysis. Second step is the digestion. Third is the phase separation. Fourth step is the DNA precipitation. Fifth step is the washing by the ethanol, and then air drying and the storage of the DNA. First of all, we will take the sample to extract the DNA. And the sample that we have is the human blood sample. We will take 200 microliter of human blood and we'll add in each tube. After the addition of 200 microliter blood sample, we will add 1000 microliter of lysis buffer. So we will pick the pipette which is 100 to 1000 microliter and will set on it 1000 microliter. Now we will add the 1000 microliter lysis buffer in each sample. After the addition of 1000 microliter lysis buffer, we will vortex the sample for 5 minutes. This is vortex machine, and we will now vortex the sample to homogenize the mixture. After the vortex, we will centrifuge the sample
at 13,000 rpm for 15 minutes at 4 degrees Celsius. We will keep the samples in centrifuge machine. It should be remembered that while keeping the samples centrifuge machine should be balanced from each side. Centrifugation will be done at 13,000 rpm for 15 minutes at 4 degrees Celsius. So we will set the centrifuge machine at 13,000 rpm at 4 degrees Celsius for 15 minutes and start. After the first washing, we will discard the supernatant, and at the end of the tube, we have a pellet which contain our DNA. Pellet is actually a collection of cells where the DNA have, and after these steps, we will go for the cell lysis through the digestion buffers. This was our first washing. We will discard the supernatant, preventing the pellet. Now we will again add the 1000 microliter of lysis buffer, and we will again do washing until the pellet become colorless. For the second washing, we will again add the 1000 microliter lysis buffer. After the addition of 1000 microliter lysis buffer, we will again move to centrifuge machine and will centrifuge the samples for 15 minutes at 13,000 rpm at 4 degrees Celsius. After the second washing, the results will be like this. You can see the pellet has become somewhat colorless, but we will again do the third washing until the pellet will become totally colorless. We will discard the supernatant, preventing the pellet. Again, we will add 1000 microliter lysis buffer for third washing. Now again for third washing, we will centrifuge the sample on the same conditions as previous, like 13,000 rpm speed at 4 degrees Celsius for 15 minutes. After third washing, the results will be like this. The pellet will become colorless. We will discard the supernatant, preventing the pellet. After the 3 steps of washing, when the pellet will become colorless, we will add 20 microliter of proteinase K. The basic function of the proteinase K enzyme is to digest the proteins. As we know, the DNA is associated with histone proteins for its packaging inside the nucleus of the cell. So the proteinase K will digest the proteins, which will lead to the specific extraction of DNA. We will take that pipette within a range of
20 microliter in order to add the proteinase K in the solution. K in the solution. After the addition of proteinase K, we will add the 80 microliter of sodium rhodesilyl sulfate, which is commonly known as STS. The basic function of STS is also to denature the proteins. Basically, STS is a detergent that imparts negative charge to all protein. And we know that DNA also contains the negative charge. So when all the proteins get the negative charge, they will get repelled from the DNA and will be separated from the DNA. So SDS is also used to digest the protein. We will take the pipette within a range of 10 to 100 microliter in order to add the sodium rhodesilyl sulfate. We will set the pipette at 80 microliter. After the addition of 80 microliter STS, we will add 250 microliter of buffer A1, which will be used to stabilize the DNA at the required pH. We will take pipette of range 100 to 1000 microliter and will set on 250 microliter in order to add the buffer A1 in the solution. After the vortex, we will incubate the samples at 58 degrees Celsius for overnight digestion in water bath. The basic purpose of overnight digestion is to obtain the DNA purified from the proteins. So the proteins will get denatured and digested overnight with the help of SDS, proteinase K and the buffer A1. We will keep the sample for overnight digestion in the water bath at 58 degrees Celsius. Water level should be enough that our sample should be dissolved from the bottom. First of all, we will pick the sample from water bath and then add the phenol chloroform isoamyl alcohol. Now this is our sample after the overnight digestion. After the overnight digestion, we will complete the process of DNA extraction, which is the part B. Now we will add the phenol chloroform isoamyl alcohol in all the sample. The basic purpose of phenol chloroform isoamyl alcohol is for the phase separation. The basic purpose of isoamyl in the phenol in PCI is to prevent the foaming formation in the interface of the layers. Now we will add the 300 microliter of phenol chloroform isoamyl alcohol in all the sample. We will set the pipette at 300 microliter. Phenol chloroform isoamyl alcohol, known as PCI, is an organic solution which is light sensitive, therefore we wrap it in a aluminium foil. Actually, the PCI contains the three components: phenol, chloroform, and isoamyl alcohol. The ratio of each component is 25:24:1. 25 parts are of phenol, 24 parts are of chloroform, and 1 part is of isoamyl alcohol. We will add the 300 microliter of phenol chloroform isoamyl alcohol in our sample. After the addition of phenol chloroform isoamyl alcohol,
we will vortex the sample for 5 minutes. After the vortex, we will centrifuge the samples at 13,000 rpm at 4 degrees Celsius for 15 minutes. After the centrifugation, you will see that there will be the phase separation in the tube. Because the PCI was an organic solution, so it separates the DNA from the protein and make the distinct layers. The lower layer, which is at the bottom, contains the debris and the proteins. Debris are the worn out parts of the cell, and the upper aqueous phase contains our DNA. We will transfer the upper aqueous phase into the new Eppendorf tube. After the transfer of upper aqueous phase to the new tube, we will then add the isopropanol to precipitate the DNA. The basic function of the isopropanol is to precipitate the nucleic acid. So here, in this case, when we are extracting the DNA, the isopropanol will precipitate the DNA. Now we will add the equal amount of isopropanol in the sample. So equal amount means the volume that was of the upper phase, we will add the same volume of the isopropanol. The volume of the upper aqueous phase was 500 microliter. So we will add the isopropanol 500 microliter in the sample. In order to add the isopropanol, we will take a pipette of range 100,000 microliter and set at 500 microliter. After the addition of isopropanol, the DNA in the tube will get precipitated, and we can analyze the threads of the DNA in the tube. After the addition of isopropanol, we will incubate the sample for 5 minutes at room temperature, and then we'll proceed to the centrifugation with the same condition, 13,000 rpm speed for 15 minutes at 4 degrees Celsius. After the centrifugation, the DNA will be settled down, and we will discard the supernatant and then wash the pallet with the chilled ethanol. Now we will add the 500 microliter of ice chilled ethanol in order to wash the DNA pallet to remove the remaining contamination. We will set the pipette at 500 microliter in order to add the ice chilled ethanol. After the addition of ice chilled ethanol, we will again centrifuge the sample at 8,000 rpm for 7 minutes at 4 degrees Celsius. After the centrifugation, we will discard the supernatant and then air dry the pallet. After the air drying of samples, I have added the nuclease-free water, and now we will store the DNA at minus 20 degrees Celsius. सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस प्रैक्टिकल. आई होप कि आपको बहुत ही समझ आ गई होगी. दिस वॉज द बेस्ट वीडियो आई हैव सीन एवर फॉर दिस प्रैक्टिकल, वरना मुझे भी इसकी कभी समझ नहीं आई थी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.